So you are saying that only one information is not with you. That is certified copy of the completion certificate. कंप्लीशन तो होना चाहिए सर। नहीं एक्चुअली वो तो मतलब सर कंप्लीट करके तो हम लोग को किया है तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन वो फिर मतलब नहीं मिल रहा है आपको भी। Now, how can it be a completion certificate is not with your office? And then also this affidavit is insufficient. It has to be notarized. We have notaries now appointed by the government of Arunachal Pradesh. Or else at least it should have been shown in before and executive magistrate. You are simply signing on a non-judicial stamp paper doesn't state that it is an affidavit. No, that is your own personal. So affidavit has to be properly shown in before a notary officer or a executive magistrate. That's what we are. But we have to now see from where, like you might have forwarded this, submitted this completion certificate to your higher authority office also. Can't you get it back from that office or to the agency that you have submitted it to? Because you have to submit the completion certificate to the funding agency from where the fund. Yeah. You cannot simply say key document misplaced or not available. So what do you say on this? Is there a way that the document can be obtained by you and given it to the appealant? Maybe we can try it. Try in the sense, no, you cannot try, you have to do it. It's, it's a public document, no. So he has applied for it, you have given all the documents that this particular document. Nine is about regarding पहले डिजिट्स तो शुरू है और हम जो बोल रहे हैं पार्शियल ये ये टेंडर के तो उसमें भी ये है हम लोग का जो पैसा जो सेंक्शन हुआ है 2% जो नोडल एजेंसी को दिया नहीं वो तो फिर और नोडल एजेंसी को फिर 2% को पे किया था यहाँ तो इसलिए जो उसमें सर और सर हम कुछ बोलना चाहिए हाँ सर इसमें ऊपर जो पेमेंट के सामने जो हमने दिया था वो हमने हाँ, ये बोला है ना हाँ सर हाँ इसका का चैनल में सुनते थे वामी तक ये तक देखना इसमें तो आपने जो 2% का जिक्र किया था तो यार मैं इसमें नहीं है वो 2% जो पीवी होता है ये जो हम परफॉर्मेंस लेवल और एक अदर जीएसटी होगा तो वो तो फिर बाद में हम जीएसटी आप लोग देता है ना वो कॉन्ट्रैक्टर जो जीएसटी होता है जीएसटी मतलब हम लोग जो सीजीएसटी एचडीएसटी बनाओ इसमें 1% 2% हम लोग फिर आपका गवर्नमेंट से बढ़ गए फिर वहां से फिर वो लोग फार्म लोग फिर बाद में 16% जो होते 18% फिर तो ये है तो ये ग्रोस पेमेंट जो जितना टेंडर का अमाउंट है जाते हैं ग्रोस पेमेंट उसमें जो पेमेंट होते हैं उसमें आए जो टेंडर टेंडर होता है तो अभी जो आपकी वो टेंडर नहीं किया उसका भी वो है उसमें मेंशन है कि जो पैसा रिलीज किया है उन लोग को नोडल डिपार्टमेंट जो यूटिलाइज किया है इसका जो बात कितना है ना टेंडर किया so you have handed over the building to the concerned already and it functional. So in this case, asking for the completion certificate is not that much of any importance because it doesn't serve any public interest also. The public interest is being served by the construction of the hospital and it's used by the public. The rest of the information have been given to you. Sir, my concern is if you know me जो हमको photograph honestly Yes. as per the DPR the photograph ये policy में school convention इसमें बहुत सारा
ये सर्विसिंग का वर्क है और एंटरप्राइज तो एक वर्क है इतनी मॉल का है और बाउंड्री फेंसिंग बहुत ज्यादा का वर्क है तो अगर ये सब का फोटोग्राफ अगर सिर्फ हम कुछ और नहीं कर रहे हैं मतलब कंप्लीशन ये क्या नहीं है देखो या मालूम यानी आप ये सर आपका फोटोग्राफ पॉलिश पे हो रहा है तो इस पर हाँ इतनी हद तक आपका No, no, it can be understood in this way. He has already made payments to the beneficiaries or contractors, whatever. You have made the full and final payment, right? And then he has also handed over the building to the concerned department, and the building is functional now. So, and then you are asking for a completion certificate when you see from your eyes physically that the building is functional now, it has been handed over. So, I don't see any public interest in getting the UC from the department now. फर्स्ट हुआ सर कि इसमें जो काम होना चाहिए एक्चुअली वो काम कोई कोई दिखाई नहीं देता है तो अच्छा या मास्टर का कंप्लीट कंप्लीट करेंगे क्योंकि अपने साथ जो पब्लिश किया है इसमें ना कोई फेंसिंग का कोई कुछ फोटोग्राफ है ना कुछ ये फर्नीचर का फोटोग्राफ है कुछ भी नहीं है जिस पे हम मेरा जैसे ऐसा है कि वो जो काम जो सर हुए बैंक फ्रॉम 2017 उसमें जो फोटोग्राफ जो मतलब फिल्म जो ये वो जो है सर उन लोगों ने जो सर डॉक्यूमेंट मेंटेन कर दिया है उसको हम पब्लिश कर इसके बाद हम लोग पेमेंट करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया अभी हम लोग इसका अंदर में हम लोग नहीं आ सकते हम लोग क्योंकि उसका हो गया So, you mean to say you handed over the building in 2018? 18-19 18-19? तो सर कंप्लीशन तो देने में सर प्रॉब्लम क्या हाँ, वो तो है। बट आपको भी बोलता है क्या ये उतना जरूरी है सर क्या? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कंप्लीशन नहीं, ये आपका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट जरूरी होगा, बट इज इट नीडेड फॉर द पब्लिक एक्चुअली क्या है पब्लिक का उसका वार्ता वार्ता हाँ ये किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम कुछ कर हाँ हाँ क्योंकि इसमें नहीं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है नहीं, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हम भी कोई एक हम आपके लिए बोल रहे हैं कि बिना इसका भी तो आपका इंफॉर्मेशन हो हो नहीं हो सकता है ना। एक्चुअली सर क्या है आपको मैंने ये चाहिए ही। चाहिए सर क्योंकि ये एजेंसी है तो ये चीज को कर रहा है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही हैंडी टेकिंग होता है ना सर हैंडी टेकिंग तो ऐसे तो आप बीच में कंप्लीट करेगा आपका काम खत्म हो गया बोल के आप वो सर्टिफाइड तो है। देने के बाद तो आपको बिल्डिंग को वो तो इसलिए तो आपको कंप्लीशन नहीं दे पा रहा है तो मतलब सर और फोटोग्राफ हम देख रहा है तो सर इसमें बहुत सारा वर्क मिसिंग है सो आस्किंग सर ये कौन सा सीरियल में है ये? सीरियल नंबर 9 में सर 9 में ना? नहीं नहीं नहीं, हैंडी टेकिंग ऐसे हो 9 अभी तो ये तो पेमेंट भी तो है पेमेंट का है 9 का सर ये 9 का हो ये फोटोग्राफ है क्या मैं फोटोग्राफ को आप ना 9 तो 9 का पेमेंट का है सर सीरियल नंबर 11 11 11 ये एक फोटोग्राफ यूसी का आपका कौन? है यूसीएम दिया है यूसी उन्होंने दिया है सर यूसी दिया 3 नंबर हाँ यूसी नंबर तो दिया है लिस्ट पे दिया है फिर आप यहाँ एकेडमी में तो वही तो रिप्रेजेंट सर्टिफिकेट कंप्लीशन। ओके ओके, ये कौन सा सीरियल में है? एक एक सीरियल नंबर Yes sir. So now serial number 8 remains still to be provided to the applicant. And then you cannot be saying that document is misplaced or not available. No court will agree to you or consider your submission like that. So this is a completion certificate is a must that after the project is completed and the payments are made, you have to submit back the certificate to the concerned agency from where the fund is come. Right? You have to submit back. No. So you do one thing. Take pain in searching out the document for him. At least this one. No. Only one still remains to be given to you. That is the completion certificate. Completion certificate will be there in the chief office or in the finance department because you have to submit back the certificate to the finance department. I believe. No?
सर और सर ये बिल नंबर 9 का क्योंकि सर मेरा डाउट इसमें है इसीलिए सर ये लोग किस प्रोसेस में यूज किया है क्योंकि सर इन्होंने खुद बोला है कि हमने एनआईटी को एक्चुअली इसका सेंट्रल अमाउंट है 2 CR सर हाँ तो इन्होंने बोला कि हमने इससे कम में हमने टेंडर कॉल किया सर इसलिए सर पर यूसी दिखा रहा है हमको 2 करोड़ का सर ये तो गलत है ना सर उसमें जो लोग थे सर उसमें जो ये जितना सेंट्रल अमाउंट है उसका बिल कितना पड़ेगा percent admin expenditure. So 2 crore. 2 करोड़ में सर 2% 4 लैक्स होगा हाँ, तो 4 लैक्स का डिडक्ट करके आपका कितना होगा सर 1 लैक्स 1 करोड़ 96 लैक्स हाँ. फिर सर हमको यूसी दिया है 2 करोड़ का तो आगे यूसी और ये इसका पेमेंट डिटेल्स जो मैच नहीं कर रहा है आपका पेमेंट डिटेल्स टोटल में है 180 लैक्स 1 करोड़ 80 लैक्स समथिंग का तो आप टू No, करोड़ in that case, so they have given you the information, no, even if it is released or not. That's up to them नहीं now. सर मेरा कंसर्न है क्योंकि इसमें वो लोग जब एग्रीमेंट साइन करते हैं जो भी पब्लिक वर्क में जब एग्रीमेंट साइन करता है इसका कंसर्न अमाउंट का अगेंस्ट में ही साइन करता है तो वो अमाउंट का अगेंस्ट में साइन करा था पेमेंट भी इतना का होना चाहिए भले ही उसमें जीएसटी आप दो या ना दो पेमेंट तो उतना का होना चाहिए स्पेशली हम तो मेरा नॉलेज एज पर माय नॉलेज आई सी दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कंडक्टर इज पेइंग द जीएसटी अपना वो अकाउंट का मेंटेन करके जीएसटी वो पेमेंट करता है वो काम का Yeah. है जीएसटी को आप डिडक्ट करता है 2% to deduct the department. हाँ, इसलिए सर इसमें हम बोल रहे हैं इंडेक्स 1 करोड़ 96 लैक्स रिमेनिंग है डिडक्ट किया भी फिर आपने पेमेंट किया 1 लैक्स 80,000 80 लैक्स 1 करोड़ 80 लैक्स का तो 196 और 180 में तो सर बहुत फर्क है यहाँ में जो पेमेंट दिखा रहा था फिर वो जो 2.5% हम लोग तीन परफॉर्मेंस के रखते वो तो बाद में मतलब हाथ में दे देते हैं हाँ वो तो फिर जो जितना डिटेल्स है उसको हम देने के लिए बिहार को हम आगे दे रहे हैं नहीं तो सर और 2.5% वो तो हम भी नहीं में है The point is they've given you that information that is incomplete or that may be manufactured by them their own way. But the arithmetic may be different, but they have given you this information. If there is anything that you feel that it's forged or it's manufactured, then you have I'm not saying कि इसका जो पेमेंट डिटेल्स दिया वो कौन बनाया हाँ, नहीं को हम ये दे रहे हैं कि बाकी जो रिमेनिंग का पैसा का पेमेंट डिटेल्स का है हम सही देखते हैं ये हम ये नहीं बोल रहे कि आपने ये कोर्स करके हमको दिया ये हम नहीं बोल रहे हैं मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपने अभी तक इतना फंड का पेमेंट डिटेल्स दिखाया कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका कहाँ है वही हम पूछ रहे हैं सर इसमें हम आप गलत किया है सही किया है ये हम नहीं बोल रहे हैं हम जस्ट बोल रहे हैं कि आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया है कौन सा ये में है आपका सीरियल में है फॉर्म एक लाइन में ये पेमेंट लाइन में है परिणाम में ये केस में सीरियल नंबर 8 9 11 ये स्विच मेरा अभी का है करता है कि थोड़ा इसमें थोड़ा सा आप मेरा क्वेश्चन बचा सकते हैं और मेरा कंसर्न भी है मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ the film stated that the information pertaining to serial number 8, 9, and 11 are incomplete. Serial number 8 has not been provided, but serial number 9 and 11 are incomplete. The representative of the PIO stated that that stated in an affidavit that information pertaining to serial number 8 of the Form A of the appellant, number 8, is the document is misplaced or not available, to which the commission observed that the PIO
cannot be denying information to the applicant in any way, which are public documents, and therefore the PIO is ordered to furnish the information pertaining to serial number 8 and the full information pertaining to 9 and 11 on or before the next date of hearing, failing which the PIO will be penalized as per the provisions of Article 2005. So hearing both parties, the Commission orders the PIO to provide the information stating serial number 8, 9, and 11 completely to the event on or before the date of hearing, failing which the PIO will be penalized according to the provisions of Article 2005. Right? The appellant to intimate the Commission in the event of receiving the information from the PIO on or before the state of hearing, and to be present in the next state of hearing without fail, failing which this appeal will be heard and determined as content. Notice need not be sent to both parties, as both parties are present. So next date of hearing is from 28th October 2030 p.m. 28 October 2000, you have ample time. आज तो जुलाई है ना, मतलब सितंबर अक्टूबर 3 months time है. 3 months time में आप वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट को सचिव ऑफिस से या तो इनके पर वही आप तो वही हो गया आप तो ना एक्चुअली जो आप तो कर रहे हो तो ये तो ये तो एफिडेविट तो फिर नोटराइज करने का फिर वो कर whatever be, an affidavit has to be sworn perfectly, not insufficient. Any legal document has to be sufficiently executed as it is required. इसमें एटलीस्ट एक नोटरी करो आप, whatever you have to say, no. उसका बाद में तो whatever he wants to, इसका भी कुछ टारगेट होता होगा, तो उसके बाद देख लेगा. तो सर ये फोटोग्राफ का जो बात कर रहे हैं हाँ, ना हम मुझे बिफोर वाला तो आपकी ना हो, बिफोर वाला तो शायद कोई मीनिंग भी नहीं है. एक और वाला तो हम आजकल इतना कंसीडर नहीं हाँ हाँ तो सर स्पेशली इन पर्टिकुलर ये बहुत कंसर्न है कि ये चीज को आजकल क्या है कि जो टेक्निक पे जो कराता है अभी तो ये चीज बहुत नेसेसरी है जमाना का है तो आप इसमें अंदर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं तो जो वर्क आई थिंक उन्होंने जो किया ना सर हिसाब से तो क्या वाला तो आप दिखाना चाहिए वही हम बोल इसमें तो सर फर्नीचर का भी बहुत सारा बात है फर्नीचर वाला काम है सैनिटरी वाला है फेंसिंग है रोड है बहुत सारा काम इसके अंदर में आता है वो उसको देख लीजिएगा. whatever insufficient documents have been given, you complete the documents and provide it to the appellant on or before the next date of hearing, that is on 28 October 24th, 28 to 8. Next is SHRI TARAM versus Executive Engineer PWD Palin Division. तो कैसे का सब डॉक्यूमेंट हमको दिया है, उसको हम वो
दिया है। वो दिया है क्या कुछ डॉक्यूमेंट है? हाँ सर का है। हाँ पूरा फुल इंफॉर्मेशन मिल गया कंप्लीटली लेके आया। हाँ जी yes, yes, yes. बहुत बातचीत बहुत the PIO stated that all the information was being to and handed over to the US of Afghanistan. Just अभी भी होटल रिवर व्यू नाहरलगुन में सर ये फिलिंग स्टेशन 2002 का था क्या? अभी अभी 11th year है। हाँ ये था सर। I have been reading since home day itself. It's very क्या so I have been reading specified petrol GDP required. However, I have tried it just like get all my stuff. It's care of it. All the components. I haven't shared it. नहीं सर ये केस जो ना हम लोग जो थियरी में था यार पूरा आप जो था जो देना था पूरा एक खत्म था जो नहीं देना है उसको भी तो एक्सक्लूड कर देना सर इसके देखिए वॉल्यूम में यस यस ये तो मेंशन है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस दिस इज व्हाट आई that 2 years asked for 2016 15. but no you can name the point Yeah. Only the relevant information against the bucket. Located under SITF लिखा हुआ है तो फंड जितना एलोकेट किया दिया होगा नहीं सर और डॉक्यूमेंट को तो हम रिसीव नहीं किया है ना कभी भी अभी फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहे हैं पहले पूरा सा लिखे आया था साहब उसको साइन भी नहीं किया फिर आप लोग the form a application be to furnish all the relevant information against the fund allocated furnish all the works carried out under ये ऐसे तो लिखने से ना आप ये सब मान सकता है एक्चुअली बोले तो फंड का ही आप मांगना है तो फंड का डिटेल्स ये लोग देगा जैसे कि एसआईडीएल में कितना फंड दिया है ये सीएसआरपी में इतना फंड दिया है और सजेता में इतना फंड दिया है अब ये जो डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डजंट मैच विथ योर मेन टॉपिक वो भी है आपका वो गलती को भी देख लो इसको व्हेन वी गो वेरी डीपली प्रिसाइजली तो you are only to get the details of the fund not the works executed under those funds because we have only asked for the details of the fund तो सिर्फ डिटेल्स मंगाया डिटेल्स देना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से इतना आया ये काम के लिए इतना वो काम के लिए इतना रुपया दैट वाज द डिटेल और आप इसमें इतना सारा मांगा इसको तो पीआईओ इफ ही वांट्स टू ही इग्नोर यू नहीं सर आपका मांगा वाला कोई तो ना देगा अब जो मांगा पहले उसको पढ़ लीजिए सर वो चीज को भी आप जो पास हियरिंग फंक्शन से के लिए हाँ वही तो उसी समय में आगे तो कोशिश करना हाँ और ये भी कुछ समय में करना जो भी आपको दिया है तो अभी ना जो भी हो whatever you
You have got to see it if it is complete or not. हम लोग hearings में 6, 7, 25 और से मैंने ये प्रोसेस अगर गलती है तो ना हाँ खाना सीखा whatever be सर का देना हम तो court anytime can correct itself. Court anytime can amend itself. Court का आपको एक advocate बोलता है you have to know that. मार्केट केस को हाँ क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंस हाँ अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है नहीं ऐसे तो pass the judgment still no. The hearing is going on. Hearing is still going on. When I pass the judgment, that is the final thing. सर आपके फिजिकल ये तो Now, hearing मतलब we have not gone through it exactly. Now only I am seeing it, the heading that you have put in. Whatever be, आप इसको देख लीजिएगा complete है तो ठीक है complete नहीं है तो फिर that time we'll discuss it and then sir आप you don't need to commission someone ऐसा क्योंकि अभी आप information दे दिया तो किसी को आपका बाबू को with an authority मेरा डिवीजन न्यू है I don't have even my account that year. Okay. I am finished to this is I feel my privilege. I would like to learn it. Yes. So sir, बोलना चाहते हैं आप उसको देखो ना पूरी फेकर्स करना प्रेस हाँ तो everything का हम plan लेकिन reading to mention project name. yes yes about the is the client has no the client has no asked for any project name or for which he needs a information. He has only asked about the allocation of fund and the details thereof. And so ask the applicant to at least mention some project names, but especially one specific project that he wants to do. What be that as it may, be that as it may, PIO has provided the information to the applicant, and the applicant is given time to peruse the documents, they are complete or incomplete. And what we can expect of people is mentioned hereby also the one PIO to be present in the next stage of hearing. Bringing to the action with the provisions that have their consequences, right? And to the applicant to be present in the next stage of hearing. Favorably, it is appealing to determine as what notice may not be provided for public for fixed the next date of meeting on 24th October to 28th October and 8th October. But 28th October 2:30 PM तक आप देखिए हम बताइए सर ये जो ना ये अभी जो ये किसान जो बोल रहे हैं पार्टिकुलर हम उसको इंग्लिश से लिस्ट बना कर हमें अगर हम से सर कर सकते हैं that I'll give in my judgment. ये वाला जो अभी तो it's still the hearing is still going on, no? So I'll give my judgment on any state of hearing. हमसे उनसे ये तो जरूर बात है सर Yeah, sign bro. Ria Taram. Sign. Sir. हमसे घूमते versus executive engineer PWD Basar. Yeah, that's right. If you have to have इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं कर देता क्योंकि असिस्ट पॉलिसी क्या ना पता कर दिया क्या फोटो क्या
Complex question competitive. Mm. Fue ya por la mira, Today in the board hearing, the PIO is absent for consecutive 10 times. The last hearing, which was held on 4th March 2025, PIO was absent without a reason made known to the Commission. And today also, 17 25, PIO is absent. The appellant present and had heard the hearing. आपको इंफॉर्मेशन तो दिया है ऑलरेडी उसके बाद मैं बोलूँ कंपाइलिंग ठीक से नहीं किया था हाँ रिटर्न कर दिया the in the second hearing the appellant was provided with uh, information copies of information by the representative of the PIO to which the appellant after going through the documents requested the PIO to compile the information properly as the present handed over information are not compiled properly. No, the information not indexed so that the applicant could understand what information are being provided to him. To which the representative of the PIO agreed in the court of the commission to comply with the request of the applicant. In the fourth hearing, in the third hearing held on March 4th, the third hearing held on 4th March, the consecutive action of the PIO compelled the commission to issue bailable warrant of arrest to secure the PIO to be present in the next date of hearing. A copy of which was sent to the Deputy Commissioner and the SP, Leparaga District, and the officer in charge, Basar, received and returned the bailable warrant of arrest. The officer in charge, OC Basar Police Station, has failed to return the available warrant of arrest, which is unbecoming of the OC in discharging his statutory duty, and for which the SP Raparada is hereby ordered initiate action against the OC Basar Police Station and action taken be intimated to the Commission at the earlier, and SP Leparaga District is hereby ordered to secure the execution and return
returning of the available warrant of arrest issued to the PIO on the next date of hearing. In the event of the absence of the PIO, the hearing could not be seated, for which the hearing is postponed to another date. Principal upon the circumstances stated above. Principal upon the circumstances stated above. The Commission hereby orders 1. The PIO to be present in the next day of the week. A properly compiled set of information to be given to the appellant. Failing which, the PIO will be penalized as well as disciplinary action initiated according to his service rules. Number 2, the appellant be given a legislative of hearing. Failing which, this appeal will be heard and determined as public. 3. The HP Leparada to oversee that the Orsi Basar returns the available warrant of arrest issued against the PIO without fail. Next, the Deputy Commissioner Leparada to comply with the order to put to oversee that the SP Leparada complies with the order of this commission. Notice need not be issued to the appellant as he is present to the next date of hearing is fixed from 24th October to 28th October 28 अक्टूबर को एक बार अभी एसपी को एक ऑर्डर करके एसपी नहीं मान रहे नहीं तो हम जजमेंट पास कर देगा टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में उसके बाद तो वंस आई पास द जजमेंट इफ ही प्लीज दैट विल बी कंटेम्प्ट अगेन वो ज्यादा फिर इसका मैं क्या आया उनके को फोन दिया तानिया जून आया है अरे बहुत महीना का बाद में ओके ओके लास्ट थर्ड हियरिंग में 4 मार्च को ये एक भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया बोल रहा था अभी तक कुछ दिया है आपको एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया सर 4 मार्च को ऐसे है हाँ and I didn't give you the summary. So it's my humble prayer to the honorable court कि आप लोग जो रजिस्ट्रार है जो भी रिस्पॉन्सिबल है काइंडली आप लोग ऐसे भी दूर में रहता है काइंडली हम लोग का ऑफिशियल ईमेल में या जो भी है सामान नोटिस जो भी होगा भेज दीजिएगा नहीं तो लास्ट टाइम का जैसे इनकन्वीनियंसेस हुआ है जिसका मेरा अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ है despite of the fact of me providing the information that also twice. First it was provided on 11th December and then next as per the directives of the court it was provided
on 11 December, and then before that also, submission was less in this court that the information they were seeking is too voluminous and rare. So they asked for a specific information was to furnish administrative approval and sanction order copies from 2010 onwards till that of BFR scheme inter West Kannada. It was made known to them that in West Kannada district there are three divisions, Helong, Kergaon and Gondula. So we have given the Gondula part. This is the subject. Yeah, you have already provided the information to the client. Yes, sir. On 11th December itself, yes, they received. If they haven't got it, then they already come leaking process. Hospital designing. They have posted it to you. अगर आपको चाहिए नहीं भी हम देने के लिए तैयार है एनी टाइम आप आ जाइए ऑफिस से कलेक्ट कीजिए इसलिए हम जो ये डिटेल को बोलने से तो वो लोग लेने नहीं सके इसलिए टेंशन होता है सिर्फ सर वहाँ हाँ टेंशन होता है लास्ट टाइम में तो अभी आप ऐसे कीजिए आपका ई सेक्टर नाहरलगन ई सेक्टर नाहरलगन तो एक बड़ा एरिया होगा नहीं होने से भी तो पोस्टमैन जाके कहा एग्जैक्ट लोकेशन आप कुछ लैंडमार्क नहीं लिखने से तो कैसे पहचानेंगे उस समय में हम भी बाहर से इसलिए इसलिए आपको सर जो भेजा है नहीं मिला हो तो आप जाके इंफॉर्मेशन को ले लीजिएगा आपका तो वो है जी सिर्फ ये सैंक्शन ऑर्डर है तो कल तो फ्राइडे है आप मंडे को आ जाइए ये मेरा एचईआईओ है ये आपको दे देगा और ये बोथ पार्टीज प्रेजेंट had the PIO. The PIO stated that the information pertaining to the sanction orders of VRF schemes, VRF, Village Reserve Forest schemes, entire West Coming area. Cannot be provided by him because West Coming has three divisions. West Coming has three divisions. Three forest divisions. And the PIO represents Gomjila Forest Division only. And he has provided the information that's applied by the applicant and posted it to the address of the applicant to registered post on the only date request. I think it's 12th December 2024. Which the appellant stated that he has not received the letter or the information sent by the GIO. Next, the commission, after hearing both parties, hereby observes that the letter or the information sent by the PIO come DFO, Bomdila Division, has not reached to the appellant because the appellant has not provided a specific address as well as any landmark to his address by which any postman would have delivered the letter or the information to the appellant. The commission hereby observes that the PIO has diligently carried out his part of providing the information to the PIO, appellant,
due to postal services failure, settlement necessity, and therefore the commission ordered the appellant to personally attend to the office of the PIO to obtain the information, and the information won't be posted through post office again, as the appellant is directed to obtain the information in person from the office of the PIO, Bombilla Forest Reserve. And the information regarding only the sanction orders, na? Sanction orders, and all the other listed informations in the Form A of the appellant is severed, SEVERED, severed to be furnished. हम लोग डिस्पोज करने से भी ठीक है, हम जाके ले लीजिए ना, 5-6 बार हो रहा है तो इंफॉर्मेशन तो वो सैंक्शन ऑर्डर सिर्फ आप मांग रहे हैं, सैंक्शन ऑर्डर तो ऑलरेडी है। फिर सही में नहीं देगा, फिर काफी मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं। मुझे तो लेके आप डिस्पोज कर सकता है, डिस्पोज देगा सभी। नहीं, he'll again fix the next date of hearing, no unnecessarily he'll take pains to come down. See, आप लोग को ये जानना है, when a PIO comes from his place to the commission's court, he's unnecessarily wasting the public resource. Public resource क्या है? He himself is a resource for the public, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए. He's coming here without attending the duties at Bombilla. He has come yesterday. He's attending here. Tomorrow he'll go back. 3 days public का काम को रुका रहा है. All because of you. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको आप सिर्फ सैंक्शन ऑर्डर है, उसको आप ले लीजिएगा. We'll dispose of the case today. इससे तो सारा बहुत किया था, फिर बाद में इससे तो नहीं Then you file a fresh application. एक तो किस सब ऑर्डर में वो लिखिएगा. हाँ, और आप ऐसे इस पर जैसे एफआई मत कीजिएगा, इतना 16 अभी तक करके तो स्पेसिफिक देने से फॉर देम आल्सो इट्स इजियर, नो. बाकी डिवीजन का तो आप बाकी डिवीजन से मांगिए, इनका तो ये रेटी है बॉम्बे डिवीजन. अभी आप सुना वेस्ट कमिंग में 3 डिवीजन है बोला था, सारा का सारा डिवीजन के इंफॉर्मेशन इनसे नहीं मिल सकता है ना. नहीं वो करता तो इससे पूरा डिवीजन टीम पे इससे नहीं जाता हाँ नहीं 3 डिवीजन नाम वाला को हम लोग फिर आके मारने बुलाए थे, फिर कुंडला में उसमें कमिंग डिस्ट्रिक्ट लेके वो जो नेटिको पैनल का जो फर्स्ट पैनल प्रकार रीजन ऑफ फ्लागाम बाकी बीचा होगा, और ये जो कलक्कम गुप्पा शेरगांव दिरांग वेस्ट पैनल के अंदर आते हैं, तो इसमें 3 फोर्स दिखते हैं, ये को अलग अलग हाँ जब 3 डिवीजन में तो 3 डीएफओ होगा ना. हाँ वही तो इसलिए हम बोल रहे हैं डिस्पोज ऑफ कर लो. बुलाएगा ना हाँ ना वो शेरगांव का देखिए ये उसकी दाखना में हो नहीं ध्यान में रखते हैं ये गुजरात में रूपा बीरपुर बियर पर अच्छा ग्राम्य होना हम लोग केम्पा का नहीं मांगा है, ओनली बियर ओनली पेपर का मांगा, केम्पा का बात नहीं करेंगे इसमें. तो इसलिए डिस्पोज ऑफ द केस तो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए था उसमें फ्रेश. हाँ कर देने से ये तो हम तो सारी जो is the information only sanction orders the for states are already ready with the PRM, and the applicant in its form and apply information pertaining to the whole West Common state, but has 3 divisions. It has 3 forest divisions. The PIO has provided the information pertaining to division of it, and therefore the commission hereby objects that the appeal be disposed as
information have already been posted report, but the receipt of the claim is denied by the client. For him, information rights or the document to go in person to the secretary on the city to reach the client has agreed. Therefore, the case the activity disposed of and liberty event to them to file fresh application to the concerned PIO from food of you, then the rest of the information. हाँ बाकी डिवीजन का फ्रेश से फाइल करो लेकिन ऐसे 2016 से लेके अभी तक ऐसा मत करो एंटरटेन नहीं करें फॉरेस्ट लुक है ना हाँ 2010 का स्कीम भी अभी तक चल ऐसा वाला एक आप करो ना जैसे अभी का ये आपका बीआरएफ का है तो बीआरएफ का वो ठीक है। जो हाँ होगा इसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है अब बाकी को क्या क्या डिवीजन है दोनों तो ये मुझे अनुश्योर हेलो सब कंप्लेन नंबर लिखते हैं लेकिन आप वो कर सकते हो लेकिन पहले आपको अब तिरंगा है हाँ का जितना भी रहेगा वहाँ पर किताब है आप आरटीआई करने का जरूरत नहीं है अब मेरा पास आइए कोई भी साइट देखने का मन है देखिए आपको जो कमेंट नहीं आने मिलेगा नया डीएफओ है ये ना कोरोना वाला रेस्पॉन्स नहीं लेके वो चला गया उसका केस तो कर सही कर देते कोई काम नहीं था